morning, students. Some useful compounds. First one is NaCl. Chemical name is sodium chloride. Other names are common salt, table salt. Sodium chloride is generally we use in kitchen as a food in pot. It is a salt of strong acid and strong base. It means when we dissolve NaCl in water, it gives strong acid and strong base. So we can say it is a salt of strong acid and strong base. Preparation method. How can we prepare NaCl at industrial level? To prepare NaCl, drying the ocean water or salty water. Ocean water or salty water to prepare NaCl. It contains many impurities like magnesium chloride and calcium chloride. To remove these impurities, pass HCl gas in saturated solution of NaCl. When we pass HCl gas in saturated solution of NaCl to remove impurities like magnesium chloride and calcium chloride, then in this method NaCl precipitates in pure form. NaCl precipitates in pure form when we pass HCl gas in saturated solution of NaCl. It is the preparation method of NaCl. Next, properties. In properties, first one is it is white crystalline solid like white powder, and second property, it is soluble in water. It's soluble in water easily. Its melting point MP is 1081 Kelvin. At this temperature, solid form of NaOH convert into liquid form. So it called MP, melting point of NaCl. It gets ionized in aqueous solution. Ionized means when we dissolve NaCl in water, it ionizes into Na plus or Cl minus ion. So we can say it ionized, easily ionized in aquatic solution Na plus or Cl minus. These are the properties of NaCl. Next, usage of NaCl. NaCl general use. First one is it used as salt in food. Next, it used as a preservatives. Preservatives means किसी फूड को लॉन्ग टाइम तक बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रेजेंटिव्स प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज इट यूज्ड एज ए फ्रीजिंग मिक्सचर. फ्रीजिंग मिक्सचर मीन्स होता है आइस प्लस NaCl. Ice plus NaCl mixture is called freezing mixture. It used to form some compounds like NaOH, NaHCO3, Na2CO3. These compounds can form or can prepare by NaCl, sodium hydroxide, sodium bicarbonate or sodium carbonate. These are the usage of NaCl. Next, second compound NaOH, sodium hydroxide. Sodium hydroxide. It is chemical name of NaOH. Next, second name is caustic soda. Caustic soda.
It is the second name of NaOH, caustic soda. It is a strong base. Strong base means it completely ionized in aqueous solution. Substance which completely ionized in aqueous solution is called strong substance, or we can say strong base. Preparation method. How can we prepare NaOH at industrial level? It is prepared by electrolysis of NaCl solution. Electrolysis of NaCl solution, NaCl plus H2. Its solution is called brine solution. ब्राइन सॉल्यूशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन. व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट इन ब्राइन सॉल्यूशन टू फॉर्म NaOH, केमिकल इक्वेशन NaCl plus H2O is equal to NaOH plus Cl2 plus H. इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, 2 and then 2 and 2, यहाँ पर भी 2 लगा. ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई. नेक्स्ट इज NaCl aquatic solution is called brine solution. When we pass electric current in NaCl solution to obtain NaOH, sodium hydroxide, and subproducts are chlorine and hydrogen. In this method, NaCl is electrolyte substance which ionize on electrolysis process. अभी आपको बताया था Na plus of Cl minus. It is a method, preparation method, electrolysis method to prepare NaOH. This method completing a cell. The cell, name of cell, Kastner-Kellner cell. Kastner-Kellner cell. This process completing a cell which name is Kastner-Kellner cell. Next, properties of NaOH. Properties of NaOH. First one property is it white slick substance. It is a white slick substance. Slick substance means soapy touch, चिकना जिसे कहते हैं स्मूथ. तो NaOH क्रिस्टल्स को हम देखेंगे तो सिल्क सब्सटेंस होते हैं, वो स्मूथ होते हैं, वो चिकने होते हैं. कैसे होते हैं प्रॉपर्टी, जैसे सॉपी टच, सॉफ्ट को अपन टच करते हैं तो चिकना लगता है, वैसा सिल्क सब्सटेंस. सेकंड वन इज इट मेल्टिंग पॉइंट इज 591. Melting point is 591 Kelvin. It means at this temperature, solid NaOH convert into liquid NaOH. It is soluble in water. It means it easily dissolve in water. This property is called soluble in water. It ionized in aqueous solution. अभी जैसे आपने NaCl को देखा था, वैसे NaOH is ionized in aqueous solution, Na plus OH minus ion. Next property, it is
crystals are hydroscopic. Its crystals are hydroscopic. Okay, आप समझे कि what is the meaning of hydroscopic? It means these crystals absorb moisture from air. These crystals of NaOH absorb moisture from air. This property is called hydroscopic property. These are the properties of NaOH. Next, uses of NaOH. First one is it used to prepare soap, paper, silk, etc. Next, it is used in metallurgy of bauxite. It is used in metallurgy of bauxite. Bauxite is the ore of aluminium. बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम. इस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को प्रिपेयर करने के लिए इस मेथड में NaOH का यूज किया जाता है. इट मीन्स वी कैन से इट यूज्ड टू प्रिपेयर एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. नेक्स्ट, इट यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम. इट यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड इट यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रीजेंट. Laboratory reagent. Laboratory reagent means to analyze radical. In laboratory. This method is called laboratory reagent. Next, sodium carbonate. Next, third compound is sodium carbonate. Na2CO3.10H2. Chemical name is sodium carbonate and second name is washing soda. इस फॉर्मूले में हम देखेंगे कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन 10 मोल ऑफ H2. 10 मोल ऑफ H2O इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर. ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वाशिंग सोडे में क्रिस्टलाइन वाटर के कितने मोल प्रेजेंट होते हैं. तो देयर आर 10 मोल ऑफ वाटर H2O present in 1 mole of sodium carbonate. This formula is called washing soda. Next, preparation method. इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? Preparation method. We can prepare sodium carbonate by sodium bicarbonate. Heating sodium bicarbonate NaCO3. Sodium bicarbonate और second name is baking soda. When we heat का ये साइन भी होता है ट्रायंगल वाला. When we heat sodium bicarbonate, it gives sodium carbonate Na2CO3 plus H2O and CO. This is sodium carbonate. When sodium carbonate recrystallize with 10 mole of H2 and give washing soda Na2CO3.10H2. It is preparation method. Next, अब देखिए कि सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करने के लिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करना होता है. हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा. इस सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करते हैं. रिक्रिस्टलाइज करने का मतलब सोडियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब 10 मोल ऑफ H2 एंड फॉर्म washing soda. Properties of washing soda. First one property, it is white crystalline solid like NaCl. It is soluble in water. Its aqueous solution is alkaline in nature. Next property, alkaline in nature. Alkaline means होता basic in nature. Basic in nature means
sodium carbonate or washing soda when dissolved in water, that solution is basic in nature or alkaline in nature. On heating it convert into soda ash. सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है. आप Na2CO3 डॉट 10H2 वॉशिंग सोडे को अपन हीट करें. हीट करने का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर आपको मोर देन 373 केल्विन, इस टेम्परेचर पे आप हीट करेंगे. हीट करने पर रिमूव द 10 मोल ऑफ H2 एंड इट फॉर्म सोडा एस Na2CO3 प्लस 10H2. Waterless sodium carbonate is called soda ash. Anhydrous soda ash is called soda ash. Sodium carbonate, we say waterless, we can say anhydrous sodium carbonate is called soda ash. These are the properties of sodium carbonate. Next, uses of sodium carbonate. First of all, it used in washing and cleaning. It used in formation of caustic soda, sodium bicarbonate, etc. It used in detergent. डिटर्जेंट एक सोप होती है, डिटर्जेंट पाउडर जो प्रिपेयर करते हैं उसमें भी सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडे का यूज किया जाता है. इट यूज इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इट यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट. लेबोरेटरी रिएजेंट टू एनालाइज एनी रेडिकल्स इन लेबोरेटरी या एनी सब्सटेंस इन laboratory are called laboratory reagent. Thanks.